So let's start. सर वैसे कल भी आपने साइंस ली थी। तो अभी कुछ दिन तक साइंस की क्लास चलेगी क्योंकि रिवीजन कराना है लाइफ प्रोसेस का। तुम लोग बिल्कुल डल चल रहे हो लाइफ प्रोसेस में, so that's why मैथ्स क्लास भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल ही मैथ्स की क्लास होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस वन। सो इन द प्रीवियस क्लास सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? इज आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so let's start. So today we'll be going to discuss a very important part, that is the transportation in human beings. Okay, transportation in human beings and transportation of water, minerals and plants. That's means overall transportation we are going to study. So actually, what does the word transportation means? Okay, so transportation means if we are actually transporting something, okay, from one place to another, okay, that will be considered as transportation. So what does it literally means? That in our daily life you need to see that the things are being transported from one place to another place. Okay, so that is called transportations. So in the real life, transportation is an essential life process. Means even a single cell, like this single cell, this is a single cell, the transportation is being done here. Okay, you can see here that these are the Golgi bodies, okay, or endoplasmic reticulum. Okay, and these are the Golgi bodies. So these endoplasmic reticulums plays a very important role in the transportations. So not only the transportation is done at the we can say then the higher organism, the transportation, if I'm saying that if anything we considered is living, so it is an essential criteria for every living organism. For every living organism, if it is alive, it is living organism, the transportation must be there. Even if I'm talking about this single cellular organism or single cell, we are considering cell is a basic fundamental unit of life, or we can say cell is a living organism or living thing something, so there must be some transportation, and that is being done by the Golgi bodies and endoplasmic reticulum here. And in the similar way, here the transportation in the human beings is done by the heart. You are very much familiar with this one, that heart plays a very important role in the transportations of means it is a pumping organ that pumps the blood throughout the body and plays a very important role in the transportation. In the similar way, dear students, in the plants, they are the specialized conducting tissue that we call them xylem and phloem tissue. Okay, and togetherly we called it vascular bundles. So these plays a very important role in the transportations of things from one place to another. So in the simple word, if I need to explain you here, is that transportation plays a very important role. Okay, or it is an essential life process for transporting something from one place to another. Got my point? So transportation is an essential life process that plays a very important role. Not only the transportation is done by higher organism, it is also done by the single cell organism. Means if it is a living, the transportation must be there. Okay, so let's discuss about this one. Depending on the type, okay, depending on the type of needs, or we can say that कि किस तरह का organism है, the transportations उसमें उतना ही advance होता है या उतना ही simple होता है. If the organism is simple, like a single cell, then it will have the simple transportation system or transportation system. Okay, and if the organism is complex, or there the means it is a multicellular organism like human beings, the transportation is advanced and more complex. So in plants, we can simply say that okay, so so if I'm writing here is but there are some international students also here, so that's why I need to continue this one in English. Okay, so if I'm talking here is if I'm talking about this one, that what actually the plant is. Okay, what actually the plant is. Plants, you know that in plants we usually see that the things are not very much, or we can say that it is not do not have the most advanced system and do not require the much energy. Plants में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर एकदम सिंपल एनर्जी की जरूरत होती है, तो ज्यादा भी वेस्ट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती है एज कंपेरिजन टू द ह्यूमन बींग्स. बिकॉज ह्यूमन बींग्स द एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. एंड दे आर एक्चुअली वी कैन से दैट कि हम लोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा
एडवांस सिस्टम की जरूरत नहीं होती। जहां पर बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, वहां पर हमारे पास एडवांस सिस्टम होता है। लाइक वी से दैट इन द सिंपल वर्ड अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा एडवांस ट्रांसपोरेटरी सिस्टम नहीं होता है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर let me explain you here that's how does the transportation take place in human in the plants. Okay, so let's talk about it. So first of all, if I'm going to explain you here is that let me explain you here that this is a plant actually, and you knows very well that in plants normally we water the we are if we need to water the plants, the what it is being the water and mineral is absorbed by the roots and that is present in the soil. Okay, soil से ही पानी को absorb करते हैं plants. Okay, so actually if I need to explain this one, okay, कि किस तरह से पानी का upliftment होता है, mainly we are just going to study here in this class और our topic is actually the conduction of water and mineral, कि किस तरह से water और mineral conduct करते हैं. Okay, किस तरह से water और minerals are being transported from ground or from zero or from the soil to the topmost part of the plant. So that's we'll going to discuss. Okay, so you know that these are the roots. Okay, and we water this one. We are watering this one. हम लोगों ने यहाँ पर पानी ऐड किया है. Okay, and here we have some specialized epidermal cell, and these are very thin cell. Epidermal cell, these are very thin cell that we call them root hairs. So along the roots, if I'm having some root, this is a root, so there are some hair like projections coming out from these, and we called it what we called it, उसको हम लोग क्या बोलते हैं simple word में बोले तो we called it root hairs. So root hairs are we can say the hair like projections coming out from the roots. Okay, these are the root hairs, these are very thin. मैं इसमें बहुत मोटा बना रहा हूँ तो वो बहुत बारीक होते हैं और वो they used to absorb the water and minerals from the soils. How does the water and minerals is absorbed? So let's talk about this one. So let's this green this water blue color I'm representing with water, and this mineral I'm representing with the yellow color. Okay, so you know that when we water the plants, so here the concentration of water and mineral will be more in soil as compared to the roots. What does this statement means? कि सपोज कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर जो ये छोटा सा रूट हेयर है, I'm going to make this plant here. Okay, and this one is actually the root hair. Okay, this one is actually the root hairs. So if I'm just watering this one, so the water concentration will be more. The water concentration here will be more as comparison to the root. जैसे कि मैंने simple word में in the previous class we have discussed about the diffusions of gases in the alveoli. तो हम लोग ने पिछली क्लास में उसमें डिस्कस किया था कि alveoli में किस तरह से होता है कि in the alveoli we have the more concentration of oxygen and they उसके चारों तरफ जो blood होता है there is a concentration of carbon dioxide. So here in the blood the more the carbon dioxide concentration is more, and in the here the oxygen concentration is high. So here the oxygen from the alveoli will move into the blood, and this from carbon dioxide will move into the this carbon dioxide will move into the alveoli. So because of the concentration difference, यहाँ पर आपको सिंपल यही समझना है कि अगर एक तरफ बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं किसी एक चीज के, सपोज कीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं. ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर एक दो पार्टिकल्स हैं. ओके, सो द थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर अपने आप. That's we called it the concentration difference. If the concentration is here is high and the concentration of this one is low, so the things will move from here to here. And instead of that, if I make the concentration here more, okay, here if I'm just making the concentration more as comparison to this side, the things will start moving from this side to this side. So this is the concentration. Sir, yes, so basically जो मतलब आप पार्टिकल्स की बता रहे हैं तो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे ना? yes, everything in the universe move and the earth will move from higher concentration to lower concentrations. Okay, so if I'm talking about without any using energy, if we provide the energy, so the process can be reverse हो सकता है. That we called it reverse osmosis, RO. In your filtration, that's you drink the water RO, that is the reverse osmosis, and that's things that happens जहाँ पर
चीजें जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी और द पंप, बट हियर no energy is being required. So if I'm making this route here, this is the actually this is the route here, this is the route actually that I have made here. So here is actually the this is the route here, this one is the route here, this one is the route here. Okay, so ये बहुत छोटा सा जो है वो मैंने यहाँ पर बड़ा करके बनाया है, and that we called it the route here. So you can say here that the you can simply say that in this soil when we water the plants, we are watering the plants, or the concentration of water is more in the soil than the root, because root के अंदर तो पानी खुद से पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो मिट्टी है there we have added the water. So if we have added the water to it, dear student, then the concentration of water will be more in the soil as comparison to roots. So the water will start moving to this one. The step one is that the water enters the roots from the soil just because of the concentration difference, and the process is known as diffusion. What we called it? Diffusion. By simple diffusion, from we can simply say that the water moves from soils to the root hairs. Okay, and from the root hairs it start moving to this one. It start moving to the inner part of this one. That is the, you have this one, these are the type of cells, and this we called it cortex region. These are the epidermal cells or root hairs. These are the epidermal cells. Epidermal cell. Epidermal cells. Okay. No, the diffusion does not start with the semi-permeable membrane, because agar semi-permeable, if that is the osmosis, and the difference between the osmosis and diffusion is that there is no semi-permeable membrane is being required. However, you can see that the water is not entering inside the cell. It is not entering inside the cell. It is moving. It is being absorbed, and it is just moving to the intermolecular spaces or intercellular spaces of the cell. Okay, ये intercellular space से move कर रहा है. So थोड़ा बहुत अगर चला भी जाए तो, but we can say that जो intercellular space होते हैं वहां से ये move कर रहा है. Water, it is not moving inside the cell. Okay, so now you can say that the water is moving, and why the water is moving here. So let me explain you here. You know very well that water has the two types of force. Now the water has entered in the root hairs. In the root hair, the water has entered in the root hair. Why it has entered? It has just entered because of the concentration difference, because here is large amount of water is present, here the less amount of water is present. So from here, outer region, it reaches to this one. From this is the soil region, and this is the root hair. Now why water is moving inside the plant? Why it is moving? Actually, you know that water has a specialized force between its molecules, and that we called it the cohesive force. The cohesive force is that force that is between the similar kinds of particles. The force of attraction between the similar kind of particles, okay. So if I'm talking about this one, dear students, let you understood here is that if I'm talking that कि यहाँ पर जो force of attraction है, why the force of attraction is there? Just because the one particles of water attracts the other particles of water. Why it is attracting? Because of the hydrogen bonds. And वो क्या होता है, that you will be studying in the chemistry. That's not the topic here. So one particle of water attracts the other particle of water. Okay, ये attraction force होती है. And this type of force between the similar kind of particles is called the cohesive force. Okay, and there is a different kinds of force. That is the from water particles and the different particles. एक water particle के बीच में और एक different material के बीच में एक force of attraction भी होती है, जिसकी वजह से water किसी भी चीज को गीला कर पाता है. Okay, does the mineral play a role in diffusion or transportation?
Minerals are being actually get dissolved in the water and that is moving along with the water. वो water के साथ move कर रहा है. वहां पर जो mineral का transportation है वो भी एक तरह से diffusion से ही है, osmosis से नहीं होगा. और वो क्यों नहीं होगा, that will be going to discuss. अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर osmosis क्यों नहीं हो रहा है. Let's discuss. Okay, so here actually this one is moving with this is the different. This is the water molecule. Let's suppose this is the water molecule and this is the wood of the plant or cell of the plants. Okay, this is water and this is cell. So actually you knows very well that water also attract the different particles. So let me make it properly that these are the water particles. Okay, and these are the some different kinds, different material particles. ये different material के particles हैं. That it can be wood, it can be cell, anything. So actually water is also attracting its particle. Water अपने particle को भी attract कर रहा है और साथ में वो इसके पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर रहा है. मींस ये आगे भी मूव करेगा क्योंकि ये वाला पार्टिकल के बीच में उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये अपने पीछे वाले पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करेगा. इसी वजह से अगर आपने किसी एक टिश्यू पेपर पर, जस्ट इमेजिन दैट इट इज अ टिश्यू पेपर एंड यू पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, तो वो पूरा आगे तक क्यों गीला कर देता है उसको, ऐसे क्यों वो पूरा फैल जाता है? क्योंकि वाटर का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके बीच में पूरा इस तरह से कंटिन्यूअस मतलब गीला करता है और साथ में वाटर का एक पार्टिकल जो है वो टिश्यू पेपर के पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई वो मूव करता है फॉरवर्ड. तो यहाँ पर इस तरह की फोर्स को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स मतलब जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होती है. कोहेसिव फोर्स मतलब जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में होती है. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वाटर जो है वो आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर का एक पार्टिकल दूसरे डिसिमिलर पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करना चाह रहा है कि उसके आगे वाला जो पार्टिकल है वो उसको अट्रैक्ट करेगा. इट्स वांट टू मूव फर्दर मूव करेगा और पीछे वाला वाटर पार्टिकल्स अपने यहाँ आगे वाला वाटर पार्टिकल्स अपने पीछे वाले पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करता है. एंड दैट यू हैव सीन इन द एक्सपेरिमेंट. इफ यू टेक अ बकेट हियर बेटा एंड यू फिल इट विद वाटर, आप इसको यू फिल इट विद वाटर एंड यू एंटर अ पाइप हियर. आपने एक पाइप को इसमें एंटर किया एंड यू सक इट, आपने इसको एक बार सक किया. So when you suck it, the water will continuously come inside this one. Why it is coming? क्योंकि एक वाटर का पार्टिकल अपने पीछे वाले वाटर के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है. So यहाँ वाला if it is moving downwards, so ये अपने पीछे वाले को अट्रैक्ट करेगा, उसके पीछे वाले को, उसके पीछे वाले को, उसके पीछे वाले को, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. सो दिस बिकम अ चेन. ये नीचे आएगा तो ये अपने नीचे वाले को लेकर आएगा, फिर उसको नीचे, दैट प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू. सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वाटर पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट्स व्हाई वाटर जो है वो एक सीरीज बना करके आगे मूव करता है, मतलब एक कंटिन्यूअस चेन बना करके आगे मूव करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टूड हियर इज दैट वाटर इज एंटरिंग in the roots. Why it is entering in the roots? क्यों एंटर कर रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें अपने आप मूव करती हैं. दैट्स व्हाई इट इज मूविंग. ओके, एंड व्हाई इट इज मूविंग इनसाइड, अंदर क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट फोर्सेस, दैट इज द कोहेसिव फोर्स एंड द एडहेसिव फोर्स. Why I'm writing this one? Because we have to study. Why I'm explaining you in detail. Why? Because we have to study thoroughly each and everything, because this time we are going to have the objective question paper, and in the objective question papers, every time, dear student, in the objective question paper, you will be asked so many times different types of questions. So even a single points bhi aapka miss nahi hona chahiye. Okay, so let's move further. Now this water chain reaches to this xylem tissue of the roots. अब ये रूट के जाइलम टिश्यू में पहुंच चुका है. एंड यू नो जाइलम इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल, दैट इज द ट्रिकीड्स एंड द वेसल्स. सो दीज आर द ट्रिकीड्स एंड दीज आर द वेसल्स. अब ये क्या हुआ कि ये जाइलम टिश्यू तक पहुंच गया, मतलब अभी हम लोग सिर्फ रूट के जाइलम टिश्यू तक पहुंचे हैं. ओके, नाउ दिस वाटर हैज रीच्ड टू द जाइलम टिश्यू. अब आगे का कंडक्शन का काम वाटर का विल बी डन बाय दिस जाइलम टिश्यू. एंड हाउ डज वाटर कंडक्शन टेक प्लेस इन दिस? किस तरह से वाटर कंडक्शन होता है? लेट्स स्टडी दिस वन. सबसे पहले क्या हुआ, वाटर विल रीच बाय सिंपल डिफ्यूजन से ये यहाँ पर पहुंच गया. नाउ व्हाट विल हैपन हियर डियर स्टूडेंट्स, द वाटर विल रीच टू द जाइलम टिश्यू. नाउ द जाइलम टिश्यू स्टार्ट स्वेलिंग. जाइलम टिश्यू कैसा हो जाएगा? इट विल स्टार्ट स्वेलिंग, स्वेल करना शुरू कर देगा. जैसे ये हमारे पास वेसल्स है, इट एब्जॉर्ब द वाटर, it is absorbing the water molecules. Let's suppose this is a water molecule is absorbed by this one, so it will become it swell, it will start swelling. ये थोड़ा swell कर जाएगा, it will start swelling like this way. ये थोड़ा इस तरह से swell हो जाएगा. And why this? because of this one, because the water is entering to this one, तो ये swell कर जाएगा. And when it starts swelling, it will create a pressure.
इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा एंड दैट प्रेशर विल बी पास टू द एडजेसेंट टिश्यू। इसके सामने वाला जो ऊपर टिश्यू होगा, क्योंकि इसमें बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता, नीचे वाले पर ये नहीं लगाएगा। व्हाई? बिकॉज इन जाइलम there are the specialized valves are present, specialized valves are present that prevent, जो prevent करते हैं किसको बेटा, that prevent the backward flow of water। इसके अंदर पीछे की तरफ फ्लो नहीं होता पानी, it is only unidirectional, ऊपर की तरफ मूव करेगा। so when the water is reaching, when the water is actually dear student, let you know, understood here, when the water is actually reaching the xylem tissue by the cohesive force and by using the cohesive and adhesive forces, the xylem tissue starts swelling, and because of this swelling, actually the pressure is being developed in the xylem tissue. The pressure will be developed, and this, because of this pressure, the water will be transported to the adjacent tissue above it, उसके ऊपर वाले में पहुंच जाएगा, and then it will start again swelling, ये भी swell करेगा, उसके ऊपर वाले में पहुंच जाएगा। This process remain continue and this is called the root pressure। What we called it? हम लोग बोलते हैं इसको रूट प्रेशर। तो बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर द वाटर इज अपलिफ्टिंग, वाटर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर, इसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एंड लेट्स सपोज कि इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो लोअर पार्ट तक पहुंच गया है, रूट्स के सॉरी स्टेम के, लेट्स स्टेम तक यहाँ पर पानी पहुंच चुका है। और बहुत हायर प्लांट तक हम लोग ये मानते हैं कि कुछ और भी थ्योरीज होती हैं, दिस इज कॉल्ड द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं कि अभी यहाँ पर पानी जो है वो पहुंच चुका है, एंड वी कैन सिंपली से दैट इन दी लोअर प्लांट्स, लाइक वी हैव दी लोअर प्लांट्स, उसके अंदर रूट प्रेशर मींस दिस pressure is enough to transport the water to different part of the plant, but there is a widely accepted theory। इसके अलावा एक और accepted theory है, that we need to study here। there is one more theory, okay, let's study this one, that is called the transpirational pull theory। so let me explain you here that we know that in the leaves they are the specialized pores are present, that are specialized epidermal cells or stomata we called it, is present inside these are the pores from which the gaseous exchange is taking place, and from that water, extra water from the plants is being also removed, okay। so that we called it transpiration। मैं दोबारा से समझाता हूँ कि जो leaves होती है actually in that leaf, dear student, in that leaf actually we have some minute pores, okay। so extra water from the plants comes out from these pores, extra water from these plants comes out from these pores, in pores से बाहर आता है, means the extra water is coming out from these pores। why it is coming? because extra water यहाँ से plant, what it means, plants absorb करता है 95% of water जो होता है वो whatever the water is being absorbed by the plants, out of this 95% is transported to the 95% हम लोग भेज देते हैं एटमॉस्फेयर में। प्लांट्स यूज्ड टू सेंड इट in the atmosphere। yes, Abdul Wahid, do you want to say something? So what is transportation of water in other parts called? Transport, that is the root pressure theory, okay। that is also means simple, the transportation of water is called ascent of sap। पूरे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को हम लोग एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये हम लोग जो बोल रहे हैं ये एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होने की बात चली, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, okay okay। the removal of extra water from the plant is called transportation। so let's study this one, इसको थोड़ा सा देखते हैं, okay। so if I'm talking about this one, okay, if I'm talking about this one कि यहाँ से हमारा पानी जो है वो बाहर गया, why it is moving? because stomatas are open and they are removing the water, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है for keeping the temperature of the leaves constant, not increasing। क्योंकि बहुत गर्मी अगर होती है तो वहां से पानी कंटिन्यूसली इवेपोरेट करता है, तो बदले में लीव्स को ठंडा भी करता है। सो दैट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी हम लोग वो नहीं पढ़ रहे हैं। so the 95% of water is removed through the transpiration, only 5% is, yes, it is 5% is utilized by the plant for different purposes, okay, for photosynthesis and other things, okay। so let's talk about this one। so here the water is being removed, dear student, water is being removed from this pores, and when the water is being removed from these pores or from the leaves, actually what will happen do you think? when the leaves are, means the water is being removed from these small pores, or we call it stomata, if this water is being removed from this region, then what do you think will happen in the leaves? Do you think? Do you have any idea?
what would happen? सर पानी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा जो स्टेम में. No, that will create that will actually create a vacuum inside the leaves. Okay, that will create a deficiency inside the leaves actually. Okay, so when the water is being removed from this region, so actually if the water is being removed, dear student, so this water is being removed, so what would happen? So that will create a deficiency of water inside the leaves and will create a vacuum inside the leaves. So you drink the juice or some water or any liquid with the help of a straw? Yes, everyone has drink from the straw. So when you, if this is a glass, okay, let me must be on the next slide. Let me, okay, someone is mic is open, beta, so please keep it mute. Okay, so if I'm talking that, let me make a straw in a glass. Okay, so this is a water or juice or anything, and this is a straw. Okay, when you are sucking the from this region, what does it mean? It simply means that you are creating a vacuum in this pipe. This result in the upliftment of the juice. Okay, this will create a suction pressure inside the pipe, and this will result in the upliftment of water from this region, from the glass into the straw. In the similar way, when, dear student, now the leaves is having so much water, but actually when the water is continuously being removed from the leaves, so there will be a vacuum or a cavity will be created inside the leaves, that we called it because of that cavity or vacuum, a specialized pressure will be developed, and we call that pressure as suction pressure. Suction pressure, a specialized pressure will be developed, and that we called it suction pressure. And because of that suction pressure, the leaves will start demanding the water from its twigs. The leaves will start demanding water from these twigs, or from which the leaves is attached. And you know that there are so many leaves in a plant. So when the leaves are demanding water, so they will be creating a huge pressure on the branches, and branches will be creating a huge pressure on the stem. So water has been transported up to this level. Yahan tak to pani aa chuka tha by root pressure, and the further upliftment of water will take place with the help of transpirational pull, and that we called it transpirational pull theory. Let me explain you one more time in a quick version. You know that plant does not require so much energy, so the transportation is simple. It does not have any advanced organ like the heart, like we have in human beings, because in human beings we required much energy for our survival, for our maintenance of body temperature, or for other metabolic activities. We have a specialized transpiratory system and a specialized organ called heart that help us in the transportation. But in plants we don't have this specialized organ, but we have a specialized cell, a specialized tissue. Yes, Abdul Wahid. So can we say that transpirational pull and suction pressure both are same? Yes, transpirational pull and suction pressure both are same. Transpirational pull and suction pressure both are same. So water is entering into the root here. Sir, you mentioned that vacuum is just a theory. So proved theory. Vacuum is not a theory. Vacuum is just a transpirational pull theory. Yes, this is a theory. We don't have the exact proof of this one. There are other theories also that we can say that are also explaining the way of water transportation. But this is the mostly accepted theory. This is not a law. This is a theory. It can be proved wrong. In some cases, it can be proved wrong. Theory और law के अंदर यही फर्क होता है कि theory को आप एक बार गलत प्रूफ कर सकते हो, लेकिन law कभी गलत प्रूफ नहीं हो सकता. So it is a theory. In some, but this is a widely accepted theory. ये बहुत ज्यादा accepted theory है. जैसे Big Bang theory is a theory. उसे कहते हैं कि इस तरह से एक बहुत बड़ा नेबुला बना था, वो ब्लास्ट हुआ, देन बहुत thousands of years, millions of years तक अर्थ को ठंडा हुआ. But this is a theory. It is a theory. We cannot prove this 100%. हम उसको prove नहीं कर सकते. वो law नहीं बन सकता. So that's why the water is entering the roots. Why? Because of the concentration difference.
अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस क्यों नहीं है, डिफ्यूजन क्यों है? क्योंकि वाटर के साथ मिनरल भी मूव कर रहे हैं, एंड ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. बट हियर द सॉल्यूट एंड द वाटर एंड द मिनरल्स बोथ आर मूविंग इन द डिसॉल्व फॉर्म, and so that's why we will say that this is done by the diffusions. So water is moving, यहाँ पर आया, पानी क्यों आया? concentration difference की वजह से, and then it is moving in the inner region of the root के ही अंदर region में move कर रहा है. Why? Because of the force of attraction. There are two types of forces: cohesive force between the same particles and the adhesive force between the wood and the water particles. So because of this cohesive and adhesive force, the water is moving into the xylem tissue. And xylem tissue, when the water reaches to the xylem tissue of the roots, then in the xylem tissue will start swelling, and because of that swelling, this tissue become fluffy, and because of that fluffiness, it will create a pressure on the adjacent tissue, and the water will move to the adjacent, उसके ऊपर वाला जो टिश्यू होगा उसके ऊपर वो चला जाएगा पानी, and then it will start moving further, ये ऊपर जाएगा, and this will continuously process. The next tissue will swell, then it will transport it to the next one, then it swell, then the next one swell, and this process remain continuing. So this theory is called the this theory is called the root pressure theory, and root pressure theory says that this way is convenient for transporting water to the lower part of the plants. For higher plants that are going to have the 100 meters height, for that plants we have a specialized theory that called the transpirational pull theory, and according to this theory, the water transportation take place with the help of transpirational pull that is created inside the leaves because of the loss of water from the leaf, continuous loss of water from the leaves. If the leaves the water is being continuously loosed, then it will create a vacuum inside the leaves. उसके अंदर क्या होगा? एक vacuum create हो जाएगा बेटा, and because of that vacuum, because of that उसकी वजह से we can simply say that a vacuum will be created inside the leaves, and because of this vacuum, they will start demanding or a suction pressure will be created inside the leaf, and the leaves will start demanding water, क्योंकि यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ भरना है, यहाँ पर उसको फिर से कुछ ना कुछ फिल करना है. सो क्या होगा बेटा कि यहाँ से ये स्टार्ट करेगा डिमांड करना पानी को, और सारी लीव्स एक साथ डिमांड करेंगी, तो वो एक ह्यूज प्रेशर क्रिएट कर देंगी स्टेम पर, एंड फ्रॉम द स्टेम the water will start moving upward. And moreover, one you need to understand here about the xylem tissue is, in the xylem tissue, there the valves are present. The valves are present and they do not allow the water to go back. So जो पानी ऊपर चला गया वो वापस पीछे नहीं आ सकता, और ये एक वेल्व की वजह से होता है. जो जाइलम के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो वापस नहीं आएगा, और अगर ये वापस नहीं आएगा तो ऊपर जितना पानी चला गया है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर डेवलप करता है ना, सपोज करो आपने एक पाइप ले लिया और उसके अंदर कोई वेल्व नहीं है, आपसे बोला कि इस एंड से आप पानी को ऊपर कीजिए. सो आप इस एंड से इस पानी को कितना ऊपर कर लेंगे? आप 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर तक आप पानी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी ताकत नहीं होगी, आप इसको ऊपर अपने मुंह से नहीं पहुंचा सकते, बिकॉज दिस जितना पानी ऊपर जाएगा वो बैकवर्ड एक प्रेशर क्रिएट करेगा आपके मुंह के अंदर और मुंह पर, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी इसको ऊपर पहुंचाने के लिए, अदरवाइज ये वापस आना चाहेगा ग्रेविटी की वजह से पानी. लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए जिसमें ऐसे कुछ वाल्व्स हो कि जितना पानी ऊपर चला गया वो पीछे को फोर्स नहीं लगा सकता, तो बस आपको इतना पानी चढ़ाने के लिए जितना फोर्स लगेगा बस आप उतना ही यूज करेंगे, जब ये पानी ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर ये बैकवर्ड नहीं आएगा. सो दिस विल रिमेन कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस वॉल द प्रेशर इज नॉट बीइंग क्रिएटेड. गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. ओके Yes, ओके sir. ओके. Okay, so that does the swelling and shrinkage of guard cells is created by no beta, that is the guard cells की जो swelling है और मतलब वो है वो भी हाँ हम बोल सकते हैं कि पानी की वजह से होती है. If there is extra water in the means there is a lot amount of water in the leaves is present, so stomata will start swelling, and जब stomata swell करते हैं so they will come into its original shape, and the shape of this one is like this, और वहां पर opening open हो जाती है. Means I can say that they will open up, वो खुल जाएंगे and the stomata will comes out, बाहर आ जाएंगे. But in the case, it also takes part in exchange of gases. Yes, it also takes part in the exchange of gases, both in photosynthesis and the
respirations also, because plants also respires. So respiration, photosynthesis, and the we can say the transpiration, इन तीनों में guard cells important play करते हैं, stomata का important role होता है. So I can say you that when the stomata there is a large amount of water is present in the leaf, so वो बाहर निकलेगा और उसकी वजह से और पानी आता चला जाएगा, ये process continue रहता है. Okay, got my point, everyone? Yes, sir. Everyone, dear student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kevin, do you understood? Yes, sir. Okay, is Asila is there? Tanishka? No, Tanishka is not here. Okay. Okay, so let's move further, dear students. Let's move further. So I have written this whole text. जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है. Let me explain you this one. Okay, so let me explain you transportation in plants. So how the transportation in plants occurs with the help of a specialized conducting tissue called xylem. Vessels and tracheids. Okay, xylem tissue is divided into 4 parts actually, but the important role is played by the vessels and the tracheids. These are the 2 specialized cells that is making the xylem tissue, because xylem is a complex tissue and it is made up of 4 different types of cells: xylem tracheate, xylem vessels, xylem tracheids or tracheids and vessel, xylem fiber and xylem parenchyma. So xylem fiber and parenchyma does not play any role in the conduction of water. So we are just writing here vessels and tracheids. So transportation in plants occurs with the help of a specialized conducting tissue called xylem, and we called it togetherly vessels and tracheids. Water and mineral is absorbed by root hairs. Why it is being absorbed? Due to the concentration difference between the root hair and the soil. Because you know that the concentration difference is taking place in the root hairs and the soil, because soil has a higher concentration of water and it's and mineral than the root hairs. So the water will move and along with the minerals into the root hairs from the soil. So absorbed water reaches to the xylem tissue due to the cohesive. Cohesive means the water molecule force and the adhesive force, water and the plant tissue. Okay, they are the cohesive and adhesive force of water molecules called capillarity. इसको हम लोग बोलते हैं capillarity actions. Capillarity इसको क्यों बोलते हैं? Let me explain you this one also, why it is called the capillary action. You see that here कि हमारे पास अगर ये ट्यूब बहुत पतली होती है तो वाटर की कुछ ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे विल रीचेस टू दिस लेयर, यहाँ तक पहुंचेंगे. ओके, लेकिन अगर ये ट्यूब बहुत पतली हो जाए तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो दे विल बी स्टिकिंग. वो एक पार्टिकल जो होगा वो बेटा ट्यूब को पकड़ेगा फिर और दूसरे वाले को पीछे खींचेगा, फिर वो ऊपर मूव करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. यहाँ से ये ऊपर पहुंचा, फिर उसके ऊपर, फिर ये प्रोसेस मींस इफ द ट्यूब इज नैरो द वाटर विल कंटिन्यूअसली मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करता चला जाएगा. So in the similar way, because of the cohesive and adhesive force, cohesive force कहाँ पर है? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, and adhesive force between the water particle and this glass tube, इस glass tube के बीच में. So because of that, the water is moving. So let me explain you here. The water absorb reaches to the xylem tissue due to the cohesive means water and adhesive force means water and plants tissue. Wait, me, sir. Yes. Sir, what is meant by water? Water means Sadiq, water means that Is between the same particle of water, same particles of water means water particles and other water particle. The force of attraction between the water particles and other water particle. They are molecules. Yes, same particles, same molecules. Okay, and the adhesive force between the water particle and the plant tissue, that it can be wood or something others, of water molecules called capillarity. We call it capillarity. When water reaches to xylem tissue, when water is reaching to the xylem tissue swell, which create a pressure on the adjacent tissue. Means when water reaches to the xylem tissue, water is reaching to the xylem tissue, the tissue will swell. Okay, why it is swelling? Because the water is being reached. पानी वहां पर पहुंच गया तो एक लिमिट होगी ना कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, उसके बाद वो swell करना शुरू कर देगा, and after swelling it will create a pressure on it. So when water reaches to xylem tissue, the tissue swell, which create a pressure on adjacent tissue. Thus water is transported to next xylem tissue, and this is called root pressure. Got my point? Why water is reaching to the xylem? Yes, sir. Okay, everyone. So let's move further. The transportation in Sir, can I screenshot?
Yeah, you, why not? You need to understood here one thing, that the capillarity action is so many times, and it is an important part of this chapter. Okay, why water is reaching to the, and the phenomena of water reaching from root hairs to the xylem tissue, it is just because of the capillarity action. That is called capillarity action. इसको हम लोग capillarity बोलते हैं, जब वाटर का एक पार्टिकल के बीच में और दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वाटर के पार्टिकल्स और प्लांट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और प्लांट्स के. So we can say that this phenomena of reaching up water due to the cohesive and adhesive force is called capillarity. We call it capillarity. So this is an important part. So this can be asked in 1 marks question. So this is important, mark this point. Water reaches to xylem tissue, the tissue swell, which create a pressure on adjacent tissue. It will create a pressure on adjacent. Thus, water is transported to next xylem tissue. Water is transported to next xylem tissue, and this is called root pressure. We call it root pressure. Got my point, beta? Yes, sir. Okay. Okay. So let's move further. The transportation of water in xylem, the transportation of water in higher plants is explained by a specialized theory that is called the transpirational pull theory. Means in higher plant, it is explained by a specialized theory called transpirational pull theory. And according to this theory, water loss, पानी का खत्म होना from aerial part, जो हवा में रहता है, aerial part of the plant through stomata के through, जिसको हम लोग बोलते हैं transpiration, result in water deficiency in the leaves. इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है leaves में. This deficiency create a suction pressure inside the leaves, and because of this deficiency, a specialized pressure called suction pressure is created inside the leaves, and thus leaf demands more water. Leaf demands more water from twigs. Twigs means जो टहनियां होती हैं उससे, टहनियों से. And the twigs demands more water from stems. The twigs will start demanding because all the twigs will communicate, or the branches will togetherly start, because all the plant is being connected, all in all एक stem से ही connected होता है. So they are all pressure, all the leaves is actually or indirectly demanding its water from the stem. So, and the stem demands more water from roots, and thus root is and this result in the upliftment of water to the top of the plant. Got my point? Got my point, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there a single student, only a single student, is there any single student who want me to explain it again? Everyone got understood? Should I move? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So capillarity action समझ में आ गया सबको, cohesive and adhesive forces समझ में आ गई हैं, suction Yes, pressure, sir. transpirational sir. pull theory, root pressure, everything समझ में आया आपको बेटा? Yes, sir. move. Okay. Yes, sir. Now let's move to the next part, and one more important thing is that the transportation of water, that's maybe a 1 marks question, mark it. The transportation of water and mineral in plants is called ascent of cell. Got my point? Okay, so let's move further. Transportation of food, and we called it translocation. Okay, transportation of food is called, like the water and mineral transportation is called ascent of sap. In the similar way, like the transportation of water and mineral is called ascent of sap, in the similar way, transportation of food is called translocation. Now we are talking about the translocation of food. Means now the food has to be transported. Okay, so let's discuss this one in detail. So if I'm talking about this one, dear student, let me explain you here. Okay, so actually the transportation is done by a specialized tissue, main conducting tissue, that will call it phloem. Okay, and phloems have 2 types of cells. One is the companion cell, another one is the C tubes. Like the xylem tissue, जैसे कि xylem tissue के अंदर 2 तरह के cells होते थे, trichids and vessels. In the similar way, phloem tissue also has 2 main conducting tissue. One is the C tubes, another one is the companion cells. Since at maturity, the C tubes lacks nucleus. जब ये mature हो जाते हैं C tubes, तो इनको nucleus नहीं होता, इनके पास nucleus नहीं होता. सोचो कि कोई इंसान without brain, उसको काम करने के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत होगी.
So companion cell help them. तो companion cell help करते हैं. Companion cells के पास nucleus होते हैं, and actually they will be helping the C tubes for the proper conduction. Okay, so let me explain you further कि how does the conduction take place. So let me explain you further there. First let me explain you here. Okay, so let assume this is a leaf. This green part is called the leaves, and these are the specialized cell that we called it chloroplast, where the photosynthesis is taking place and the food is being manufactured. Okay, now assume that I have also explained you that in the leaves there are a specialized cell called mesophyll tissue, like we have made this one, and I have explained you this one in the previous classes. So this is the actually internal structure of leaf. This is actually the internal structure of leaf, beta. Okay, so let me explain you here कि सबसे ज़्यादा जो photosynthesis होती है leaves में, that occurs in this mesophyll tissue. Mesophyll tissue. Someone mic is open, so please switch off that mic. Turn off that mic. किसी का mic open है? Whose mic is open, beta? Ghazala. Ghazala, beta बंद करो. Ghazala, do you want to say something? Yes, sir. Tell me, beta. बंद कर लिया. Okay, so if I'm saying that the leaf, here we have the leaf, dear student, and in this leaf food is being synthesized. यहाँ पर क्या बन रहा है? खाना बन रहा है. So जाहिर सी बात है, लीफ के पास सबसे ज्यादा ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा? जहां पर सबसे ज्यादा बनेगा वहीं पर सबसे ज्यादा होगा. एंड यू आर वेरी मच फैमिलियर कि अगर जहां पर खाना बनता है, आपने देखा भी होगा कि if the food is being cooked in the kitchen, then the smell of the food will reaches from the kitchen to different part of the room or the house, or from house to in the kitchen. Sir, from kitchen. Okay, so it will be moving from kitchen. So in the similar way, if the food is being prepared here, so actually they will be transported. This is the companion cell, and this is the phloem tissue. This is the phloem tissue, or we can say that this is the sieve tubes. This is the sieve tubes. Okay, sieve tubes. So if I'm talking that the food reaches to the companion cell of the leaves or this phloem tissue, this and this is togetherly phloem tissue. This is the companion cell, this is sieve tube, so togetherly this is called the phloem tissue. So this is reaching. No, companion cell is not the part. Leaves actually has the vascular bundles. This is the internal structure of the leaves, and here the xylem and phloem is present. So in every leaves, xylem and phloem tissue will be present. So this is the vascular bundles, and togetherly we called it xylem and phloem tissue, means water conduction and food conduction इसी के through होता है. So this is the vascular bundles. Vascular bundles. Okay, so water conduction, actually I'm talking about this one. What's the time right now? Okay, so let me explain you this one, dear student. So here this conduction of water. Oh, फिर से सवाल. Sir, what is the role of vascular bundle? Beta, vascular bundles are xylem and phloem tissue, and actually xylem tissue help in the conduction of water. Means I can simply say that vascular bundles are of, means it is divided into two parts. One is the xylem tissue, another one is the phloem tissue. This is made up of phloem tissue is made up of two types of main food conduction cells, that is the companion cell and the sieve tubes, and this actually help in the transportation of food, and this actually help in the transportation of water and minerals. Okay, water and mineral transportation. So dear student, if I'm talking about this one, that actually the water is being prepared here, food is being prepared here, and the food is being transported to this companion cells. Well, why? Because there is a higher concentration of glucose is there in this one, and the lower concentration of glucose is there. Okay, now from this one the glucose will reaches to this one. Sometimes
sometime this process require energy, sometime it does not require energy. कभी तो इस प्रोसेस की जरूरत एनर्जी से लेकर के होती है, कभी बिना एनर्जी के भी ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है. Okay, now if this listen to me, beta बहुत ध्यान समझना, you have to understand it more. Now the water now the food, this red color portion has reached, I am making the food with red color, the food has reached to the sieve tubes, or we can say that tube or phloem tissue, or this phloem tissue. Okay, why? Because of the concentration difference, because leaves के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है और यहाँ पर उतना ग्लूकोज नहीं है, तो ये पहुंच गया यहाँ पर. अब क्या होता है बेटा? Now actually xylem and phloem tissue are very close to each other. You can see here, here in this both we have the xylem tissue like this way. ये ऐसे से cells होते हैं. We have like this cells. हम लोग के पास इस तरह से cells होते हैं. Okay, and this upper region is called the phloem, and outer region is called the xylem. This is the xylem and this one is the phloem. So ये इस तरह से cells होते हैं. Xylem and phloem tissues are very close to each other. So they are binded with, actually में bind करके रहते हैं एक दूसरे से. So you know that this is a pipeline from which water is moving upward. ये blue color का मैंने बनाया है. Water is moving. This is the xylem tissue and this is the phloem tissue. यहाँ से खाना transport होता है, this from this region, and this one से water transport होता है. Okay. Now actually what is happening here, let me explain you, कि पानी जो है वो साइडवेज जाइलम में जो पानी होता है वो साइडवेज कंडक्शन हो सकता है, यानी साइड में जा सकता है या फिर ऊपर, बैकवर्ड नहीं जा सकता. बैकवर्ड कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑफ वाटर. इट कैन मूव अपवर्ड और इन साइडवेज. So do you know that there is a large amount of water is present here in this cell, but here no water is present. यहाँ पर कोई water present नहीं है. And you know that actually glucose without water means it is a good absorbent of water, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा glucose है, sugar है, but it does not has water. So water from the xylem tissue will reaches to the phloem tissue. In the water that is moving upward from that tissue, the water reaches to the phloem tissue. Means from xylem it reaches to the phloem. Why it is moving to the phloem? Because of the concentration difference again, because there is a large amount of water is present here and no water content is present here. So water is moving from here to here. Why? Because of the concentration difference. Because of the concentration difference. I'm again telling you, because of the concentration difference. Large amount of water, no water. So water is moving from here to here. So when the water reaches to this phloem tissue, again the phloem tissue will swell. ये फिर से phloem tissue को swell कर देगा. And because of this swelling, a pressure will be created, and this will help in the transportation of what means ये adjacent tissue पर कर देगा. फिर ये उसके adjacent tissue पर, और ये process continue रहता है. और इस तरह से जो है जहां भी सिंक, सपोज करो यहाँ पर ये लीव्स है, यहाँ पर ये खाना बना है, और ये सिंक है. सिंक मतलब जहां पे खाने को स्टोर करना है, तो उस जगह जाकर के खाना ट्रांसपोर्ट हो जाता है. सो ये बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यस, so transportation of water from xylem to phloem is also diffusion. Yes, you can say it is diffusion, or you can say it is osmosis, because यहाँ पर जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, and moreover only the water is being transported, so you can say it is osmosis here. Okay, or you can say it is by diffusion. Okay, actually we can say that osmosis and diffusion की अगर मैं बात करता हूँ तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन दोनों में होता है. ऑस्मोसिस में फर्क ये है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर यानी सॉल्वेंट मूव करता है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. ओके, लेकिन यहाँ पर नहीं होता. यहाँ पर आप कह सकते हो कि दैट इज एक्चुअली ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, बिकॉज द वाटर इज ओनली मूविंग, सो इट यू कैन से दैट एक्चुअली कि ये वर्ड ऑस्मोसिस के थ्रू है. ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोसिस. Okay, so we can simply say that the water is moving from this region to this region. Why? Because of this close proximity of xylem. अगर xylem पास में नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता. Because of the close proximity of xylem and phloem, the water from the xylem tissue actually reaches to the phloem tissue, and because of this transportation of water into the phloem tissue, the xylem tissue swell, फूल जाता है, मोटा हो जाता है, and this will create a pressure inside the phloem tissue. ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा. And this will result in the pressure into the adjacent tissue, and that will result, you can simply say that this will result in further
गॉट माई पॉइंट बेटा एवरीवन? सो इस तरह से ये सिंक में ट्रांसफर कर देता है. सो आई हैव रिटन दिस वन इन वेरी क्लियरली. सो लेट मी एक्सप्लेन यू how are the product of photosynthesis transported from leaves to other part of the plant. Means how does this happens? So transportation or transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. We call it translocation, and it occurs with the help of vascular tissue called phloem, because vascular tissue are of two types. One is the xylem, another one is phloem. So this is also a vascular tissue, phloem. And which of the vascular tissue? Phloem. बिकॉज फ्लैम टिश्यू दो तरह के, सॉरी वैस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और फ्लैम. वैसे तो मैं बोलूं तो जाइलम भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. फ्लैम में ही एक्चुअली फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो. यस आरजू, यू वांट टू से समथिंग? So we can also say the movement of a material from the leaves to other tissue of the plant is called a translocation. Yes, you can say transportation of food, movement of the food, especially from the leaf to different part of the plant. You have to use the word food. Okay, sir. Okay. So beside photosynthesis, product like amino acid, beside the photosynthesis product, along with this amino acid and other substances are transported with the help of phloem to the storage organs like roots. तुम्हें पता है कि कुछ प्लांट्स में रूट जो होती है वो स्टोरेज ऑर्गन होती है, जैसे कैरेट. यू कैन सी दैट दिस इज अ मॉडिफाइड रूट. ठीक है. और लाइक वी हैव दी, कुछ में स्टेम होती है, जैसे वी हैव दी पोटैटोज है स्टेम. ठीक है. सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. सो वहां पर खाना जाना होता है. सो वी कैन से दैट द स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, दैट इज रूट, फूड, सीड्स, एनीथिंग. वो कहीं भी जाए, लेकिन वो किसके थ्रू जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लैम टिश्यू. दिस फ्लैम टिश्यू, it is done by a special conducting tissue called C tubes and companion cells, act as a pipeline for the leaves to other part of the plant. जो ये क्या करते हैं? ये एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करते हैं. act as a pipeline from leaves से to different part of the plants, यानी एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. एंड यू नो दैट जाइलम टिश्यू में सिर्फ एक ही जगह अपवर्ड या साइडवेज कंडक्शन हो सकता है, बैकवर्ड नहीं हो सकता. बट इसमें अपवर्ड, बैकवर्ड सब जगह ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. सो फ्लैम टिश्यू में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन. मैकेनिज्म कैसा, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो द मूवमेंट ऑफ फूड इज अचीव बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. मींस यहां पर आपको एनर्जी भी लग सकती है, यानी कुछ एनर्जी प्लांट अपनी यूज कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन कराने में, और यहाँ पर पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. ओके. So we can say that the movement of food is achieved by both active and passive transport. The food from leaves reaches to phloem tissue. कहां से? लीव से फ्लैम टिश्यू में पहुंच गया ऑफ ट्विग्स यानी टहनियों की, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि लीव्स में बहुत ज्यादा खाना है और ट्विग्स में नहीं है, टहनियों में नहीं है, तो वहां पर ऐसे ही पहुंच गया. बाय यूजिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगी है. द फ्लैम इज एडजेसेंट टू जाइलम टिश्यू. नाउ फ्लैम जो होता है वो बराबर में होता है जाइलम टिश्यू के, which carries water, जो पानी लेके जा रहा है. This close proximity, इतना पास होना फ्लैम का एंड जाइलम का टिश्यू is very important. This is very important. And this movement of sugar in phloem, or we can say that this movement of sugar into phloem increases the osmotic pressure in the tissue. Means actually में this movement of water, this is not sugar, this movement of water into phloem means xylem से phloem में जाना. यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि xylem से, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब यहाँ से xylem टिश्यू से किसमें? phloem टिश्यू में. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू phloem टिश्यू इंक्रीजेस द ऑटोमेटिक प्रेशर इन द टिश्यू के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है टू मूव इट फ्रॉम xylem टिश्यू. उसकी वजह से वो मूव करता है ऊपर. और उसके बाद ये एक्सप्लेन भी मैंने तुम्हें किया है. द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड फ्लैम रिजल्ट इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मींस. अब क्या हुआ यहाँ पर कि ध्यान से समझना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना यानी शुगर का इनटू द फ्लैम में रिजल्ट इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द फ्लैम. यानी कि अभी तुमने एनर्जी को इस्तेमाल करके, दोबारा समझ लो, एनर्जी को इस्तेमाल करके तुमने इसके अंदर फ्लैम टिश्यू के अंदर खाने को लेकर. मैं यहां से समझाता हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ. ओहो, let me explain you here one more time. So यहां से
सपोज करो कि एनर्जी यूज करके, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस हो सकता है, इट कैन यूज द एनर्जी, अदरवाइज इट कैन नॉट यूज द एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द टाइप। सो कभी कभी एनर्जी यूज करता है। सपोज करो कि ये यहाँ से एनर्जी यूज करके खाना यहाँ पर पहुंच गया। इस एनर्जी का यूज करके खाना किस में पहुंचा? फ्लैम टिश्यू में। लेकिन इसकी वजह से बिना एनर्जी यूज करे पानी इसमें पहुंच जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से खाना पहुंचा, कभी एनर्जी यूज करता है, कभी बिना एनर्जी के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर ये सपोज करो एनर्जी यूज करके नहीं पहुंचा, सपोज करो सॉरी एनर्जी यूज करके पहुंचा है या बिना एनर्जी के पहुंचा है, कैसे ही पहुंचा है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से ये कभी कभी एनर्जी भी यूज करता है, कभी कभी नहीं भी करता है, तो यहाँ से ये अपने आप पहुंच जाएगा पानी इसके अंदर। सो यहीं पर मैंने लिखा है आगे, इन विच टिश्यू ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, बेटा फ्लाइम टिश्यू के अंदर इंक्रीज करेगा, जिसमें पानी आएगा उसमें इंक्रीज करेगा। सो here this active transport of sugar into phloem, यानी phloem tissue में आया कहां से? लीव से, result in the passive transport of water from xylem tissue, xylem tissue में पहुंच जाएगा, xylem tissue से phloem tissue में पहुंच जाएगा। The diffusion of water into the phloem creates an area of high pressure in the phloem, इसकी वजह से पानी का इसमें पहुंच जाना एक हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा फ्लैम में। दिस फ्लैम प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लैम टिश्यू, जहां पर लेस एरिया होता है वहां पर पहुंचा देता है। मतलब यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो ये खाना कहाँ पहुंचा देगा? उस टिश्यू में जहां पर लेस प्रेशर हो। ओके, गॉट माय पॉइंट और स्टिल हैविंग सम डाउट? फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओनली विदाउट वाटर और नॉट विदाउट वाटर? वाटर नहीं, नो, फूड कैन बी, फूड ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फ्लैम टिश्यू के अंदर, उसको फूड की जरूरत है, सॉरी वाटर की जरूरत है। बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि ग्लूकोज उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता जितना वाटर कर सकता है। वाटर इज, तुमने देखा भी होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को दो चट्टाने को, यानी इफ यू हैव टू ब्रेक द रॉक्स, सो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा होल कर देते हैं, और उसका होल करने के बाद या यहाँ पर बीच में लगा देते हैं, और उसको एक लकड़ी के एक एंड को पानी में डिप करके देते हैं। तो लकड़ी के जो एंड होता है वो पानी में डिप करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है स्वेल करती है, लकड़ी स्वेल करती है। स्वेल करने पर इतना फोर्स क्रिएट कर देती है कि इवन स्टोन या रॉक्स कैन बी ब्रोक, रॉक्स भी टूट जाती हैं। सो स्वेलिंग इज इम्पॉर्टेंट। स्वेलिंग होना एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है स्वेलिंग होने से कि रॉक्स तक टूट सकती हैं। तो क्या पानी टॉप तक नहीं पहुंच सकता या फूड नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता है? हो सकता है। तो दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इनटू द फ्लाइम टिश्यू दैट हैज द लेस एरिया, मतलब वहां पर, और मींस ये मैंने सिर्फ लिखा है। सर यस सर, तो उस प्रेशर की वजह से प्लांट को भी तो कुछ हो सकता है, अगर कुछ ब्रेक हो गया है कुछ। बेटा उसके पास वो होता है, क्या कहते हैं, सेल वॉल। एवरी सेल हैज अ सेल वॉल दैट इज स्पेशलाइज्ड इन द प्लांट सेल, जिसकी तो वजह इतना से, रोक देता है इतना। हाँ, यस 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 यस, एक सेल के अंदर उतना प्रेशर नहीं क्रिएट हो सकता। बहुत सारे सेल एक साथ लगेंगे तो वो बहुत प्रेशर क्रिएट करेंगे। गॉट माय पॉइंट यस सर। everyone in the class? That how does water conduction take place? Yes, sir. How Yes, does sir. food conduction take place? Yes, sir. Okay, that's I will be highly thankful to you कि आप एक बार में समझ गए। मुझे तो लगता ही नहीं है कि एक बार में कोई समझ सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा एक बार कि आप इसको एक बार फिर से, आई हैव अ वीडियो लेक्चर एंड आल्सो आई कैन सिंपली से दैट एक बार इन नोट्स को जरूर पढ़िएगा, एंड दैट उसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक चीजें अपने आप मूव करती हैं, और प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से ये चीजें मूव करती हैं। और सिंस वी आर नॉट गोइंग टू हैव द थ्योरी इन दिस एग्जामिनेशन, सो वी हैव ओनली एंड ओनली वी कैन सिंपली से दैट हम लोग के पास जो आएगा प्लांट्स में वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव, मींस पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पॉइंट्स विल बी क्लियर ईच एंड एवरीथिंग कि कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, फ्लाइम टिश्यू का है कि जाइलम टिश्यू का है। ओके, और वाटर क्या फ्लाइम टिश्यू में मूव कर सकता है? यस, वाटर फ्लाइम टिश्यू में मूव करता है। एक्चुअली फूड ट्रांसपोर्टेशन में वाटर मूव करता है फ्लाइम टिश्यू में। ये इंडिकेट करता है कि उसका साइडवेज कंडक्शन भी होता है, मतलब साइड में भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकता पानी। And in the similar way, you can see that here in the xylem tissue, the food is conducted in, sorry, in the phloem tissue, the food is conducted in upward and downward, कहीं भी मूव कर सकता है। There is no need, जहां पर भी सिंक होगा वहां पर ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। Got my point or still having some doubt? Everyone got my point? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Is there any single student, please let me know, is there any single student in the class who does not understand the topic and wants actually
me to explain it again? Sorry, can you please explain it again? Okay, let me explain you. So I'm saying here is that key in the water, here we can say that in the leaves there is a high concentration of glucose. Why? Because glucose is being synthesized in the leaves, so there will be going to have the higher concentration. अब यहाँ से leaves से companion cell तक खाना जो आएगा वो या तो एनर्जी यूज करके आ जाएगा या बिना एनर्जी यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक खाना आ गया. इट कैन टेक द एनर्जी और विदाउट एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द टाइप की किस तरफ ट्रांसपोर्टेशन करना है. So it is an active or maybe inactive process, or active transport or inactive transport. But when it reaches to the phloem tissue, the water from this which part from this xylem tissue will start moving into this simply I can say that into this phloem tissue. Why? Because there is a large amount of water content is present here. But there is no water content is present here. So the water will move from this one to this one. So water is moving. Why it is water moving? Because of the concentration difference. और वो बहुत पास में है तो इसलिए water move कर जाएगा. And if the water is moving, so what would happen? So यहाँ पर पहले से ही ग्लूकोज है, ऊपर से आपने पानी भी सेंड कर दिया, तो it will create a pressure inside this one. So this will result in swelling of this tissue. And because of this swelling, a high pressure or a pressure will be created in this tissue. And the pressure is created. So this pressure will result or will transport to that region where there is low pressure. So ये क्या करेगा, खाने को और पानी के साथ उस जगह भेज देगा जहां पर लो प्रेशर होगा, यानी उसके एडजेसेंट टिश्यू में. फिर यहाँ से ये स्वेल करेगा, फिर ये यहाँ पर, and this process will remain continue. Phloem tissue support both upward and downward movement. Yes, phloem tissue support both upward and downward movement. Got my point or still having some doubt? All of you got my point or still having some doubt? Got my point? Yes, sir. Yes, sir, got you. Okay, so that's all for today for Kevin and you. Kevin, we are just going to start the class. Okay. Okay. Okay, the next class I'm going to give you the 5-minute breaks, and the other student please leave the class except the Kevin and Tanishka. If there is Tanishka, other student may leave the class because we are just going to study some different topics that's not from your examination. So that's Okay, sir. Allah Hafiz. take care, beta. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Assalam. Okay. Yes, Asila, how are you? Asila, were you attending the class? I'm asking, were you attending the class from past 1 hour? Or you have attended? No, sir. I told you to take the backup. Okay. You forgot. Ammar Shams? Yes, sir. Beta, you may leave the class. Zed, you may also leave the class. Who is this Zed? More. Okay, so Kevin and Asila. So let's start. Beta, I'm asking you again, Asila and Kevin, because Asila has not attended this class. So I'm asking you again, beta, do you have any doubt regarding to this transportation, or do you want to take any screenshot regarding to this topic that we have studied? Because we have to study, क्योंकि हमारे पास time बहुत कम है बेटा, and we have to study a lot. So अभी तो हम लोग को ये पढ़ना है पूरा. Okay, so that's required a lot of amount of this one. So beta, we have to study a lot. Okay, so if you have any doubt, you can ask me. Kevin, are you there in the class?